Hello everyone, this is Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video lecture, we are going to talk about Unit 1, जिसका नाम है Responsibilities of Youth. ये कायदे आज़म की स्पीच से एक एक्सर्प्ट लिया गया है जो कि उन्होंने एक कॉन्वोकेशन एड्रेस पर दी थी. So before moving on to the explanation of first paragraph, we'll discuss difficult word meanings extracted from this paragraph first. So first difficult word in this paragraph is convocation. It means a large formal meeting, especially for the ceremony at a university at the end of a course of study. उर्दू में इसे कहेंगे तालीमी जलसा. Second is address. It means a formal speech delivered to an audience, यानी तकरीर करना. Third is formal. It means following or according with established form, custom or rule. उर्दू में इसे कहेंगे पुरतकल्लफ. Fourth is academic. It means relating to schools, colleges and universities or connected with studying and thinking, not with practical skills. उर्दू में इसे simply कह देंगे तालीमी. So let's move on to the explanation of first paragraph and begin the speech. तो कायदे आज़म अपनी स्पीच की ओपनिंग किस तरीके से करते हैं, वो रेफ़र करते हैं वाइस चांसलर को पहले, दैट मिस्टर चांसलर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, और फिर बताते हैं कि जब मुझे वाइस चांसलर ने अप्रोच किया और ये रिक्वेस्ट की कि आपको इस कॉन्वोकेशन पे आके स्पीच करनी है, उस टाइम पे मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत सारे काम थे. उस टाइम पर पाकिस्तान नया नया एग्जिस्टेंस में आया था एंड एज ए हेड ऑफ दैट स्टेट ऑब्वियसली उनके ऊपर बहुत सारे काम होंगे, जिसकी वजह से वो कहते हैं मैं एक प्रॉपर कॉन्वोकेशन स्पीच नहीं बना सका, एक प्रॉपर कॉन्वोकेशन एड्रेस नहीं लिख सका. उनके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर कॉन्वोकेशन एड्रेस किस तरह का होना चाहिए था जो कि यूनिवर्सिटी के सारे सब्जेक्ट्स को रेफ़र कर रहा होता. देन उन्होंने नेम भी लिए यूनिवर्सिटी के सारे सब्जेक्ट्स के, लाइक हिस्ट्री, फिलॉसफी, साइंस, लॉ एंड सो ऑन. लेकिन फिर वो कहते हैं कि जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपने स्टूडेंट से और ऑडियंस से कुछ वर्ड्स ज़रूर शेयर करूँगा, तो मैं वो प्रॉमिस फुलफिल करता हूँ एंड आई विल शेयर सम वर्ड्स विद यू. Let's move on to the second paragraph and discuss difficult word meanings. First is flattering. It means making someone look or seem better or more attractive than usual, यानी चापलूसी करना. Second is referred. It means mention or allude to, यानी हवाला देना. Third is incumbent. It means imposed as a duty, यानी वाजिब. Fourth is measure. It means an adequate or due portion, यानी अमल. Now let's move on to the explanation of second paragraph. कायदे-ए-आज़म अपनी स्पीच स्टार्ट करने से पहले कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक द वाइस चांसलर. किस लिए वो वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन वर्ड्स में उन्होंने कायदे-ए-आज़म को एड्रेस किया और स्टेज पर इनवाइट किया, इसलिए उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं. मिस्टर वाइस चांसलर, वट एवर आई एम. फिर वो मिस्टर वाइस चांसलर को रेफ़र करते हुए कहते हैं कि जो भी आज मैं हूँ और जो कुछ भी मैंने किया है, मतलब स्टेट के लिए किया है, वो मेरी ड्यूटी थी, मेरा फ़र्ज़ था, और एक ऐसा फ़र्ज़ था जो कि हर मुसलमान पर आयद होता है, वाजिब होता है. वो फ़र्ज़ क्या था? टू सर्व हिज पीपल ऑनेस्टली एंड सेल्फलेसली. बिल्कुल सेल्फलेस होके, ईमानदार होके अपने पीपल को, अपने स्टेट के लोगों को सर्व करना.